Controversy intensifies over alleged rank inflation and irregularities. Union Education Minister Dharmendra Pradhan on Thursday rejected allegations of paper leak or rigging in the medical entrance exam, NEET UG. This after NTA told Supreme Court that the decision to award grace marks to 1,563 candidates in NEET UG for admission to MBBS, to BDS and other courses was cancelled, and the aspirants would be given the option to take a retest on the 23rd of June with no change or no delay in the counselling process. NTA has also mentioned that a high-powered committee will analyse grievances of 1,563 candidates. Meanwhile, opposition continues to attack the centre over this issue, challenging that the anger in the country over NEET exam will reverberate inside Parliament as well. थोड़ी सी निराशा तो हुई है कि पहले इतने आ गए, थोड़ा सा वो है, पर कोई नहीं। अब अगर दोबारा पेपर हो रहा है तो हम दोबारा से तैयारी करके पेपर देने को तैयार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो सेंटर था वो हरदयाल पब्लिक स्कूल बहादुरगढ़ आया था और मेरे नीट में 718 मार्क्स थे। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो तो सभी को मानना ही है, बट थोड़ा सा तो गलत हुआ है कि जो हमारा जो सेट हमें मिला था वहाँ पर पेपर में वो MNOP सेट था, और जबकि जो बाकी बच्चों को मिला था, जो 23 लाख जो अलग एक्सपायरेंट्स थे, उन्हें QRST कोड मिला था। मतलब कि जो क्वेश्चंस थे वे भी टोटली डिफरेंट थे दोनों सेट्स के। तो तब तो थोड़ा सा इनजस्टिस फील हुआ था जब मैंने एग्जाम दिया था उस दिन, लेकिन उसके बाद कोई बात नहीं, फिर नॉर्मलाइजेशन हो गया। 26 लाख देश के नौजवान बच्चे, उनके भविष्य के साथ धोखा हुआ। और अगर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं काउंसलिंग नहीं रुकेगी, तो जब काउंसलिंग ही हो जाएगी, उन मार्क्स के आधार पे बच्चों को कॉलेजों के अंदर सीटें मिल जाएंगी, तो फिर इस इन्वेस्टिगेशन का क्या फायदा होगा? क्या फिर आप उस बच्चे को जो ऑलरेडी कॉलेज में चला गया उसको उससे वापस ला सकते हो? ऐसा नहीं किया जा सकता। तो काउंसलिंग ना रोक के अगर गड़बड़ हुई है तो उस गड़बड़ का हम निपटारा ही नहीं कर रहे। दूसरी बात, जिस तरीके से केंद्र सरकार डिफेंसिव है, साफ दिख रहा है कि इसके अंदर एक बड़े लेवल पे गड़बड़ियां हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस के एग्जामिनेशन हो रहे थे, टेस्ट हो रहे थे, वो पेपर लीक हुआ है चुनाव से पहले। यहाँ नीट का पेपर लीक हो गया है। सब लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर धांधली हुई है। एक तरफ नेशनल टेस्टिंग जो डिपार्टमेंट है वो कह रहा है कि हम 23 तारीख को दोबारा इम्तहान लेंगे, दोबारा एग्ज़ाम लेंगे। देश का एजुकेशन मिनिस्टर कह रहा है इसके अंदर धांधली नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट कुछ और कह रहा है। निश्चित तौर से ये 24-25 लाख बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी बात के लिए जानी जाने लगी है कि इनकी सरकार के अंदर पेपर लीक होते हैं। एग्जाम तो ठीक से ही हुए थे। नीट ने कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए, कुछ एग्जामिनेशन लेट होने के कारण से, या ठीक ढंग से टाइमिंग के लेकर, एग्जाम से टाइम को लेकर, इसलिए मूलतः एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं है। Shrishti is getting us more details on that big story that we are tracking very closely. Shrishti, break this down for us exactly. What exactly now is expected of the NTA? What has the court really ordered? Well, Sneha, as we know, the NEET undergraduate exam has sparked a huge controversy, which has now also become part of political dialogue, where we earlier saw the opposition slamming the BJP government, saying that lives and futures of 24 lakh students have been put at stake by the Modi government. However, we have now seen the Union Education Minister, Dharmendra Pradhan himself, refute any claims of paper leaks or rigging in the exam, and he's also called out the opposition of making such false claims, something that will also affect lakhs of students and also will create confusion and affect their mental peace. As far as the exam and the counselling is concerned, multiple petitions were filed before different courts, including the top court of the country. The Supreme Court, when it heard the matter yesterday, was dealing with the issue of the grace marks, which was granted by NTA to around 1,563 students to compensate them for the loss of time which they suffered when they had taken the exam.
Now, the NTA told the court yesterday that it will cancel the scores only of these 1563 students. The grace marks will be removed and a retest will be conducted for these students. They will have an option whether or not to take a retest on 23rd June. If they do not take the retest, however, their old scores without any compensatory marks will form a part of their final result. They've also told court that the results are likely to come out for this retest by 30th June, and the counselling, which was scheduled to begin from 6th July, will begin at the same date, and there will be no changes as far as the counselling date is concerned. Okay. The Supreme Court has taken this submission on record, and in accordance with that, the retest will be conducted and the counselling will go on, because remember, no stay on the counselling has been granted by the Supreme Court. It will, however, hear this case again in July, and those petitions will deal with the allegations of malpractices, irregularities, paper leaks, etc., which have been made by several students and basically form the main part of this entire controversy. All right, Shrishti, I'm going to thank you for the moment for getting us up to speed with those. A lot of students have spoken out. Some talking about the fact that they aren't very happy with the orders of the court, but they respect the order, and that if retest is now being said that this is something that they have to do, is what in fact many students are telling us. Thanking you, Shrishti, for getting us those details.